M.G.Classes. Sharpen your thinking. Join us and feel the difference. तो बच्चों, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं उनको किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने एक मेथड जो डिस्कस किया था उसका नाम था फ्रिक्शन। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो इस टॉपिक के ऊपर होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर इस फिगर की हेल्प से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे एक मेटेलिक स्फीयर है। इट्स अ चार्ज्ड कंडक्टर डिनोटेड बाय A and it is placed on the insulated stand, and one more conductor is placed, that is B, but it is the electrically neutral and it is also placed on the insulated stand. तो अभी क्या होगा कि when I bring this conductor B near to the conductor A, तो जब हम इस कंडक्टर B को A के पास रखेंगे तो इन पॉजिटिव चार्जेस के इन्फ्लुएंस की वजह से इस कंडक्टर B के अंदर जो चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनका रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा। रीअरेंजमेंट से मेरा मतलब ये है, जो इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे दे विल माइग्रेट नियर टू दिस साइड एंड द पॉजिटिव चार्जेस will migrate on the rear side. तो अब यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं कि there is a rearrangement. All the negative charges are accumulated on the left hand side, positive charges are accumulated on the right hand side. तो ये जो rearrangement इसके अंदर हो रहा है, this rearrangement is called electrostatic induction, and this rearrangement occurs in the presence of this charged conductor A. तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, which are accumulating on this side, तो these negative charges are called induced or bound charges. Why are we calling them bound charges? I will explain to this term in the next diagram. और ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस, वी कॉल देम फ्री चार्जेस। तो इन व्हाट सेंस वी आर कॉलिंग देम एज अ फ्री चार्जेस? तो आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट डायग्राम एज आई टोल्ड। तो बाउंड एंड फ्री चार्जेस आर देयर। तो बेसिकली इन nutshell, we can say that electrostatic induction is the phenomena in which the rearrangement of charges take place inside the neutral body when it is kept near to the charged body. So now what will happen if I connect the rear side of the metallic sphere B with ground with the help of this connecting wire? So now we are using the process of earthing. तो जब इसकी earthing करेंगे तो the electrons will transfer from ground to this side and the electrons will combine with the positive charges and make them neutralize. And you will notice that कि अब यहाँ पर after the earthing all the positive charges have vanished. No more positive charge is present on this side. So that means you can eliminate
these positive charges by using the method of earthing. So in that sense, I was saying that these positive charges were free charges, क्योंकि इसको हम रिमूव कर सकते हैं. But you are noticing that the negative charges are still present on this side. So they are bounded due to the presence of these positive charges. लेकिन अगर मैं यहां से इसको भी रिमूव कर दूं, मेटेलिक स्फीयर ए को, तो then what will happen? The negative charges will no longer stand on this side. In fact, they will distribute uniformly because the entire surface is uniform. All the negative charges will uniformly distributed on the surface of this metallic conductor B. And now it is treated as a negatively charged conductor. तो इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. तो ये दो मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें एक मेथड मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एंड बोथ वी आर एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. अब जब हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, तो अब उसके बारे में हम एक छोटा सा ब्रीफ अप ले लेते हैं, यहाँ पे उसका डिस्कशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्ज की जो नोटेशन है वो क्यू है. वी आर यूजिंग दिस लेटर फॉर डिनोटिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज कैन बी पॉजिटिव or it can be negative. The first fundamental property, as you know very well, like charges repel and unlike charges attract. Positive or negative will repel to each other because of the electrostatic force between, and unlike charges attract to each other. तो ये पहली fundamental property मैंने आपको बताई. Second property deals with the conservation of electrical charges. Conservation property. Conservation of electric charges. The law of conservation of electrical charges is applicable on the isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिक्स, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सभी तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए. मीन्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is supposed to be zero. So such type of a system is called as an isolated system. तो अगर हम isolated system की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा means sum of all the charges should be zero. In another words, we can say that charges can neither be created nor destroyed. For example, अगर हम इसी एक्टिविटी की बात करें जो मैंने बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन की थी, कि अगर हम एक ग्लास रोड ले लें और सिल्क क्लॉथ ले लें, तो इनको जब हमने अभी तक रब नहीं की है, तो बिफोर रबिंग ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं. और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम का जो इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज है, दैट इज नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो. लेकिन जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं,
we obtain the same amount of positive and negative charges after friction between the glass rod and silk rod. तो अगर आप दोबारा से अगर हम इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो जो टोटल चार्ज आएगा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो 0 आएगा. तो फाइनल अमाउंट ऑफ द चार्ज इज सेम एज इट वाज बिफोर रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स. तो दिस क्लियरली shows that no creation, no destruction. So on that basis we can say that the electric charges are conserved. तो ये है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी. तीसरी जो प्रॉपर्टी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि इनको हमने ऐड किया पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो ऑन व्हाट ग्राउंड वी आर एडिंग देम. इसके पीछे बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस फॉर एडिंग द चार्जेस. उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है एडिटिव नेचर. एडिटिव नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लें which is of course a charged object in which electrical charges are non-uniformly distributed, and we are interested to know the total amount of the charge possessed by this object. So total amount of the charge can be calculated by the algebraic sum of all these charges. So we are adding the charges by using the simple rule of algebra. तो जिसका मतलब ये है कि charges can be added as per the rule of algebra. So due to this fact, charges are scalar in nature. So additive nature of the charges implies that कि electrical charges are scalar in nature, means they can be added according to the rule of algebra, what is called as the additive nature. And at last, one of the most important property जिसके ऊपर आगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम या कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन होता है. यूज तो इनफैक्ट कहीं ना कहीं सभी प्रॉपर्टीज का ही होता है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज this shows the discrete nature of the charge. जैसे हम जनरली एग्जांपल लेते हैं कि हम बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो द ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज टेक प्लेस एज द होल नंबर. फॉर एग्जांपल E, 2E, 3E and so on. And this transferring of electrons from A to B is taking place in the discrete manner. Means all the electrons are not, transferring immediately or continuously from A to B. The transferring of electrons is taking place step by step. E, 2E, 3E, 4E, like that. So this step by step transferring of electron from one body to the another body is called quantization of charge. And due to this fact, we can say that a charge which may be a positive or negative can be expressed as an integral multiple, means n, which is equal to 1, 2, 3 and so on, integral multiple of basic unit of charge, where E stands for basic
charge whose magnitude is same as the magnitude of the charge on electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. So actually quantization property is based on the experimental fact, and the experiment was conducted by the Roger Millikan. He conducted a very famous experiment which is called oil drop experiment. On the basis of his experimental investigation, he came on to the conclusion that the charge can be expressed as integral multiple of basic unit of charge. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ चार्जेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब समझाने की मैंने आपको कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।